हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरोक के रिएक्शन में। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स मीट टू माय सब्सक्राइबर्स और उनके मैसेजेस को, उनकी रिक्वेस्ट को। तो ये आपके सामने है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सजेशंस आप लोग करते हैं। जैसे शोएब अहमद भाई ने पूरी लिंक डाल दी है वीडियो की और बताया है नुमान अली पे रिएक्ट करिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सब सजेशन सही हैं, इन वीडियोस के साथ हमें आना चाहिए या नहीं। देन वी हैव रियान साकिब, वी हैव समीर अहमद जिन्होंने अगेन नुमान अली खान की वीडियोस को बोला। तो आई एम श्योर कोई फेमस हस्ती है नुमान अली खान जिनकी वीडियो पे है। एवियान है जिन्होंने लिखा है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है लेकिन उर्दू काफ़ी है। उसके बाद जिया है, उन्होंने कुरान की तिलावत के लिए लिखा हुआ है। अलग अलग कंट्रीज से हैं, दुबई से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं। और उस्मान भाई हैं, कोहिस्तानी की वीडियोस पे हैं। सादिक भाई हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, बहुत बहुत प्यार बांग्लादेश को भी। तो आप सबका प्यार और आप सबका यही सपोर्ट जो है, चाहे मैं लेट नाइट काम करूं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये जो वीडियोस बनाना, उसके बाद जो आपके कमेंट्स आते हैं जिनसे लगता है कि आप लोग जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है। इतना प्यार और इतना सपोर्ट बस यही चाहिए आप लोगों से। और इसी तरह आप लोग एक्सप्लेन करते रहिए, कंटेंट्स करते रहिए। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, जैसे इस डब्ड वीडियो के लिए, नॉन मुस्लिम वीडियो के लिए ओरिजिनल वर्जन पे रिएक्ट करने के लिए वोकैबुलरी कुछ लोगों को काफ़ी टफ लग रही है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान के वीडियो में बात हो रही है, बहुत सारी सीरीज़ के बारे में बात हो रही है, कुरान तिलावत को लेके बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। तो ये काफ़ी कुछ रिलेट है। जैसे ओपिनियन भाई ने लिखा है कि आई लाइक द कॉन्स्टेंट रिव्यू विद patience and because of me he has watched this video. It's a big achievement. Thank you so much. बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा आप सब खुश रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो सब्सक्राइब करिए के आरोक रिएक्शन को। बस यही सारे कमेंट्स और यही सारे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हमें भी एनकरेज करते हैं कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लाते रहिए। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं कुरान के टॉप 10 कंट्रोवर्शियल वर्सेस को। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट पार्ट में आपको दिखाया था टॉप 10 कुरान अनसाइंटिफिक फैक्ट्स, यानी कुरान को भी गलत साबित किया गया है इस क्लेम के साथ कि अगर अल्लाह ने कुरान पाक बनाई है और अल्लाह से कोई गलती नहीं हो सकती तो कुरान भी परफेक्ट है। मगर फिर भी कुरान में कुछ अनसाइंटिफिक 10 फैक्ट्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को क्लैश करते हैं, जिसका जवाब आप लोग मुझे उस वीडियो को डेफिनेटली देख के देने वाले हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 कंट्रोवर्शियल कुरान वर्सेस के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब इस तरीके से कोई फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा पे बात करता है ना, तो जो कंपटीशन, जो डिबेट होता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं टॉप 10 कुरान वर्सेस कंट्रोवर्शियल को। बट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। Hello everyone. Last year I made a video called The Top 10 Things the Bible Forbids Besides Homosexuality, where we covered some sexist and downright violent messages all within this book. However, the Bible isn't the only book out there with some questionable things in it. So, in this video we're counting down the top 10 controversial Quran verses. Number 10. Dismemberment. If I was ever caught stealing something, I think I'd take prison over this. Verse 538 states, "As for the thief, both male and female cut off their hands." A pretty extreme punishment, don't you think? I mean, imagine if it was a child stealing candy. Should they have their hands cut off too? Also, if a thing like your car or money is taken, that can be returned or replaced. However, if your hands are taken, those are gone forever. How can a thief rehabilitate and change their ways then? Regardless of what I think though, some Muslims out there still practice this verse. Number 9. Women are ignorant. This part of the Quran is about witness testimony and says that if there are not 2 men available to witness, then it should be a man and 2 women. Why 2 and not 1? The main reason is that in case one of them forgets something, the other can remind her, implying that females are naturally forgetful. So, according to the Quran, men are more intelligent than women. Number 8. Women deserve less. Not only are women less intelligent in the Quran, really? They deserve less too. Verse 411 says that males inherit what is equal to the share of 2 females. So while the men get to relish in the majority of the money, the women only receive half as much. If it isn't obvious enough yet, gender equality is not popular in Islam. Number 7. Incest. Have you ever had the desire to get with your cousin? Well, if you follow the Quran, you're in luck.
Verse 3350 states that the daughters of your aunts and uncles are lawful to you. And as you probably know, having offspring with your relatives can have some harmful consequences. The link between cousin marriage and genetic illness has been known for years. British Pakistanis are 13 times more likely to have children with recessive disorders than the general population. They account for just over 3% of all births, but have almost a third of all British children with recessive genetic disorders. Here in Birmingham, 1 in 10 of all children born to married first cousins from within the city's large Pakistani community either die in infancy or go on to develop serious disability as a result of recessive genetic disorders. Mohsin has a rare genetic disease which is gradually destroying his body. He was born with it because his mother and father are first cousins. Cousin marriages have been going on for generations, and as a result, many children are paying the price. Number 6. Slavery. Was getting with your cousin too hard for you? Don't worry, there's still hope. Verse 424 says that prohibited to you are all married women, except those your right hands possess. In case you don't know, the phrase what your right hands possess refers to slaves. الحرة والحرة لازم بعقد زواج، وهذا الجارية لا فقط يشتريها وخلاص كأنه يعني تزوجها. Now, you might be asking yourself, wouldn't sex with a slave girl be rape? Yeah, it would be. Number 5. Pedophilia. This part of the Quran prescribes a waiting period for remarriage. Verse 65:4 states, as for your women who have despaired of further menstruating, if you were in doubt, then their waiting period is 3 months, as well as those who have not yet menstruated. Not yet menstruated? Wouldn't that mean that... حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. Oh. Child marriages are quite common in countries like Yemen, Bangladesh, Afghanistan, and more. Heck, even the Prophet Muhammad married a 6-year-old girl named Aisha, and they consummated their marriage, aka had sex, when she was 9. People in Yemen have tried setting a minimum age for marriage, but sadly, everything they've tried has been overturned. Number 4. Domestic abuse. Is your wife misbehaving? Maybe she forgot to make dinner on time or iron your shirt. If so, the Quran has the perfect solution for you. Verse 434 says that good women are obedient to men, and if the man really fears that she'll be defiant, he is entitled to beat her. So guys, if your girl's acting up, all you have to do is... Number 3. Polytheism. If any of you watching this video believe in more than one god, I'd recommend keeping it to yourself. Verse 9:5, aka the verse of the sword, commands Muslims to kill polytheists wherever they find them. However, they can go on their way as long as they repent their beliefs. You know, it kind of reminds me of the Inquisition. What a show! The Inquisition. Here we go. Because of verses like this one, polytheistic religions like the Hindus have been oppressed for centuries. Number 2. Apostasy. What is the penalty for apostasy? What do you teach the children will happen to them if they give up the Muslim faith? Well, let's bring the debate back into Britain. What is the penalty for apostasy? Verse 489 says that if people turn away from Islam, then seize them and kill them wherever you find them. The consensus of all scholars that if a person changes his religion from Islam to any other religion, the punishment should be execution, death. If it's an Islamic country, then the Sharia is very clear. Apostasy is dealt with the death penalty. Thank you. Not only that, but there are numerous other verses in the Quran that all imply death for leaving the faith, which is why many Muslims are terrified of leaving Islam. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. And finally, number 1, world domination. This may be one of the most terrifying messages in the Quran. Verse 929 orders Muslims to fight those who do not believe in Allah until they pay the tax and submit to Islam. بقي أن يقود هذه الأرض الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، بشر بهذا بوضوح في عدد من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقيادة الإسلامية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، فلذلك ينبغي أن نكون نحن جنودا لهذه القيادة القادمة.
This man, 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥, is their leader. He demands Islamic law, known as Sharia, to be the law of the land. 𝐄𝐦𝐴's strategy is to pit Muslims against everyone else to create tension. If you've ever wondered why terrorist groups like ISIS feel it's their duty to attack non-Muslims, verses like this one are the reason why. Now, to clarify, I'm well aware that not all Muslims follow these verses, and I've met Muslims who are warm, friendly people. However, the truth is that the Quran has many dangerous and hateful messages in it, and we have the right to criticize those messages. Okay, so here was again some contradictory verses जो कुरान में थे, and the reason why I'm shocked is because he is actually mentioning the respective कुरान verses. और क्योंकि अभी मैंने सारे कुरान verses को complete नहीं किया, but जो इन्होंने वुमेन्स को लेके बात करी है, चाहे इस पार्ट में चाहे साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज में, जितना मुझे पता है हमेशा इस्लाम में औरतों को बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है, औरतों को इक्विवेलेंट का दर्जा दिया गया है. बट दिस पर्टिकुलर वर्सेस विच इज कोटिंग, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगेन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, व्हाट डू यू थिंक, क्या इसमें सच्चाई है और एम आई मिसिंग ऑन दैट पार्ट, या वाकई कुरान में ऐसे सब रूल्स एंड लॉज हैं जैसे वो 1 year old गर्ल एंड 9 years old गर्ल का मैरिज वाला कॉन्सेप्ट रहा हो? क्या अभी भी इस तरह की चीज़ें कुरान में मेंशन है या इस्लाम में फॉलो होती हैं? बहुत ज़रूरी है आप लोगों के थॉट्स को जानना, इसको डीप समझने के लिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो क्लेम की जा रही है, बिकॉज ही इज मेंशनिंग द एग्जैक्ट कुरान वर्सेस की प्रॉब्लम क्या पे, क्या इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी भी कोई वर्सेस कुरान में प्रेजेंट है? ये तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. डू लेट मी नो, आई विल बी लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड रीडिंग योर कॉमेंट्स सून. आप सब अपने थॉट ज़रूर 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 शेयर करिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत है या सही है या एक घुमा के भी अगर इसे बताया गया तो सही इन्फॉर्मेशन का पास ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसी से किसी भी रिलीजन का कोई भी फर्स्ट टाइमर मेरे जैसा जो देखेगा वो एक कंसेप्ट को क्रिएट करेगा. तो लेट मी नो अबाउट थॉट्स ऑन दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल. अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 को और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए. बाय बाय.